Before we dive into the criteria, let's first very quickly look at the concept of an association not-for-profit, even though we have dealt with in the introduction. However, it should be a good idea to add some basic points to that brief introduction. First and foremost, remember that associations not-for-profit does not mean that you are prohibited from earning or making profits. It simply means that you have to reinvest your profits, यानी कि जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे वो आपको रीइन्वेस्ट करना होगा for the promotion of the goals for which you have created the association not for profit. I think that's pretty simple. यानी कि आपको आपका कमाया हुआ प्रॉफिट इंश्योर करना है कि वो री इन्वेस्ट आप करें किस चीज़ के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की जो ओरिजिनली आपका पर्पस था, जिस वेलफेयर, जिस बेनिफिट के लिए आपने क्रिएट की थी, उसके लिए आप उस ऑब्जेक्ट्स को फर्दर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करेंगे, ना कि अपनी जेब में डालेंगे. दैट इज़ वेरी सिंपल. Next, you have to remember that if, for example, you are very passionate and want to do something for the greater good, for the society's benefits, then essentially there is one major reason why you would choose to create an association not for profit under the Companies Act 2017 instead of any other law, and that is कि आपको limited liability का benefit मिलेगा on the one hand, but on the other hand, as we're going to look at in a very short while, कि on the one hand आपको ये benefit मिलेगा कि आपकी कंपनी as a limited liability कंपनी ऑपरेट करेगी, but on the other hand you will not be forced to add the word limited at the end of the name of your company. This is a requirement which all companies otherwise have to follow. However, association not for profit का अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है SECP से, then you are not going to have to add the word limited at the end of the name of your company. So the next thing that I'm going to talk about is that when we talk about associations not for profit, तो the name sometimes is misleading. You might think association not for profit का नाम सिर्फ NPO है या association है, so it's not like a company. But don't get confused by this name. Just remember that an association not for profit is ultimately at the end of the day a company, and basically just use your common sense and logic that it's formed under the Companies Act 2017, and as we have studied before while studying the concept of body corporate or corporation, we have studied that any company formed under the Companies Act 2017 is going to be counted as a company. So yes, just remember this very minor point that an association not for profit is a company at the end of the day. And next, you have to remember what kind of company is it. Just remember that it's a public limited company and not a private one. It has to be registered as a public limited company, as we're going to look at very briefly in the criteria that we will discuss shortly. Just remember that it has to be registered as a public limited company, not as a private one. Also remember कि public limited की जब हम बात करते हैं तो you would ask me कि public limited में भी हमने दो types पढ़ी हुई हैं, एक होती है public listed, एक होती है public unlisted or non-listed. So just remember that an association not for profit can never ever be a listed public limited company, so it's always going to be obviously non-listed or unlisted. Okay, so those were very brief overview points. I'm going to move on to the details about the criteria for obtaining a license. However, before we move on to study that criteria, you have to remember some basic other preliminary points. That is, why should a person or a group of persons, essentially because it's an association of persons, so why should they create an NPO in the first place? Again, it can be an NPO under any law, not necessarily the Companies Act. However, why should somebody start a non-profit organization? Firstly, regarding NPOs generally, just remember that you can get benefits such as easily obtaining donations and also getting funds for promoting the objects of your NPO, which is difficult to do otherwise.
And secondly, a point that's related to that, the first one, just remember that you can get tax exemptions. So this is one major reason, so that obviously the more you have to pay away in taxes means the lesser you have for the promotion of your objectives and goals. So just remember that these are the benefits that you get once you get yourself registered as an NPO generally under any law, be it the Companies Act or any other law that we have looked at. However, another point that you have to remember is that specifically, like I've already mentioned this, but I'm repeating this because it is so important, but when you register your NPO as an association not for profit under section 42 of the Companies Act 2017, then you get the added benefit that first and foremost you can claim limited liability, which is very important. And the beauty of creating an association not for profit under the Companies Act does not end there. Why? Because not only do you get the advantage of having limited liability on the one hand, but on the other hand, you are not forced to add the word limited at the end of your name. So like I've mentioned this in the beginning of this video, you are not forced to add the word limited at the end of your name, and this is extremely crucial because remember that when you see, as a member of the general public, when you see the word limited at the end of a company, it always, kind of gives the impression that it exists for commercial purposes and exists for profit making essentially. So this kind of impression is obviously not going to help your goals and purposes. So always remember that on the one hand you get the advantage of having limited liability, but on the other hand, once you can register your company under the Companies Act as an association not for profit, then you are not forced to add the word limited at the end of the name of your association, and that is something very important. So let's say a group of persons wants to start an association not for profit, and they have to now meet the criteria set by the Companies Act 2017 in order to get the license. Now, I've already mentioned that section 42 is the relevant pertinent section as regards the licensing of associations not for profit. And I've also talked at length about the reasons why somebody, basically a group of people, would want to start an association not for profit under the Companies Act. यानी कि ये जो group of persons है, ये स्पेसिफिकली कंपनीज़ एक्ट के अंदर ही क्यों एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट करना चाहते हैं, ये किसी और कानून के अंदर क्यों नहीं क्रिएट करते, तो इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. देखें, सेक्शन 42 कंपनीज़ एक्ट 2017 बहुत ही सिंपल है. 4 रिक्वायरमेंट स्टेट हुई हुई हैं जो कि एक कंपनी को मीट करनी होंगी अगर उनको ये रेलेवेंट लाइसेंस चाहिए इन ऑर्डर टू ऑपरेट एज एन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट. तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आई एम गोइंग टू वेरी ब्रीफली स्टेट दीज. आप सेक्शन 42 भी देख सकते हैं एंड मैंने आपको लेक्चर स्लाइड्स शेयर की हुई हैं, तो आप उन लेक्चर स्लाइड्स में भी डिटेल में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सेक्शन 42 कहता क्या है. स्लाइड्स में ऑलरेडी समरी अवेलेबल है. हाउएवर फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन द वेरी मेजर पॉइंट्स. सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डिक्लेयर करना होता है कि आप किस यूज़फुल ऑब्जेक्ट के लिए ये एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं. देखिए, ये काफ़ी नहीं होता कि आप बस ये स्टेट कर दें कि हम माशरे की बेहतरी के लिए या जो है कोई एसोसिएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं. दैट इज़, इट्स नॉट इनफ टू जस्ट स्टेट दैट यू आर गोइंग टू बी डूइंग समथिंग फॉर द ग्रेटर गुड, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. नो, यू हैव टू स्टेट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट यू हैव इन माइंड. सो ये ऑब्जेक्ट लाइन आपको एंटर करनी होती है इनिशियली इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड इसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है क्या. सो फॉर एग्जांपल, एक्ट में टोटल 11 पॉसिबल ऑप्शंस मेंशन्ड हैं, जिसमें से कि प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, ये सारे तो ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक 12th ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है फॉर एनी अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट. एंड एनी अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट का सिंपली मतलब ये है कि अगर आपकी
कैटेगरी जो है वो उन 11 कैटेगरीज़ में फ़िट नहीं आ रही है जिस टाइप की एसोसिएशन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं जिस पर्पस के लिए, तो आप सिंपली अपना पर्पस स्टेट कर दें, अपना ऑब्जेक्ट स्टेट कर दें। तभी ये 12th ऑप्शन क्रिएट किया गया है, ताकि अगर आप किसी और कैटेगरी में, स्टेटेड कैटेगरी में फ़िट ना हो रहे हो, तो आप ये 12th कैटेगरी में अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, एनी अदर यूज़फुल ऑब्जेक्ट। देखिए, दूसरी रिक्वायरमेंट भी बहुत सिंपल है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कमा तो सकती है, लेकिन वो प्रॉफिट, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि वो प्रॉफिट अपनी जेब में आप नहीं डाल सकते। तो इससे ये बेसिकली रूल रिलेटेड है कि द सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ दैट मेंबर्स आर नॉट allowed to be paid dividends, and dividends basically, अगर मैं आपको simple language में बताऊँ, तो it's basically the profits that you get from the shares that you own in a company. So members are prohibited from getting any profit that the company earns. देखिए, इसका रीज़न बहुत सिंपल है। होता क्या है उमूमन कि जब कुछ लोग एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट तो कर लेते हैं एंड वो किसी और कानून में भी नहीं जाते, बिकॉज़ उनको लिमिटेड लाइबिलिटी भी चाहिए, कंपनी का ये वाला फ़ीचर भी अवेल करना है उनको। तो जब वो एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्रिएट करते हैं, तो होता क्या है, शुरू में तो सवाब कमाने के लिए या फिर वैसे ही जनरली फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। हाउएवर होता क्या है कि जब बाद में, जब व्हेन दे सी कि अब हमें डोनेशंस मिल रहे हैं, फंडिंग हो रही है, बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, तो उस वक्त, उस पॉइंट पे अक्सर लोगों की नीयत ख़राब हो जाती है। दे स्टार्ट थिंकिंग दैट दे कैन जस्ट कीप द प्रॉफिट्स फॉर देमसेल्व्स, द एक्स्ट्रा फंड्स दैट दे आर गेटिंग, द डोनेशंस दैट दे आर गेटिंग। तो ये नीयत बदलने वाला जो ऑप्शन है, ये अराइज़ ही ना हो। ये प्रॉफिट्स जो हैं, जो कंपनी अर्न करेगी फ्यूचर में, ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट अर्न करेगी, उसमें कोई गुंजाइश ही ना हो कि मेंबर्स खुद अपने लिए उनको रख लें। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज़ ऐसी सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, हो सकती हैं, तो SECP ने ये रूल सेट किया हुआ है। एंड बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन द कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट मेंबर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अर्निंग डिविडेंड्स। एंड डिविडेंड्स बेसिकली सिंपली क्या होते हैं, दे आर प्रॉफिट दैट यू अर्न on owning the shares in a company. So simply याद रखें that members are prohibited from getting any of the profits from the company. अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर मेंबर्स के ऊपर प्रोहिबिशन लग गई कि वो प्रॉफिट्स नहीं रख सकते कंपनी के अपने लिए, तो सवाल ये है कि फिर प्रॉफिट्स जाएंगे कहाँ। तो रूल नंबर 3, दैट इज़ रिक्वायरमेंट नंबर 3 इज़ लिंक्ड टू रिक्वायरमेंट नंबर 2। एंड कुछ आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्चुअली सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स नंबर 2 एंड 3 आर बेसिकली जस्ट वन पॉइंट, इंटर रिलेटेड पॉइंट है। तो रूल नंबर 3 सिंपली सेज कि एक और रिक्वायरमेंट आप पे ये लग जाती है, शर्त ये लग जाती है कि आप अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करें टुवर्ड्स द promotion of the goals and objects of your company, and this also I've already talked about, so मैं अब ये repeat नहीं करूँगी। Last requirement, that is the fourth requirement, is also very simple. Simply, an association not for profit is not allowed to carry out any activity, whether currently or in the future. That is, an association will not be granted the license if currently it is carrying out any activity, or in the future it starts carrying out any activity. The license can be revoked. And the activity that is prohibited is basically any activity that is going to be against the national interests of Pakistan, and if it in any way affects the sovereignty of the country, or for instance it affects the national security. And इसकी best example है terrorist related activities, and हम सबको पता है कि अक्सर NGOs जो है exist करती हैं for illegal purposes as well, and this is precisely the reason that the SEC has specifically prohibited that any NPO registered under the Companies Act 2017 is not allowed to carry out any such activity. So hopefully you can see that the requirements, the 4 requirements are very basic, and they're kind of logically linked, so it's very easy to remember. The first one is, to summarize, that you have to state the specific useful object for which you want to create your association. Secondly, you have to state that, declare basically that you are not going to pay any dividends to your members. And thirdly, that since you are prohibited from paying dividends to your members, then the question arises automatically
automatically as to where the profit is going to go. So that profit basically, the third requirement states is that you have to reinvest it for the promotion of the goals and objects of your association not for profit. And fourthly, the fourth requirement is that you have to ensure that you don't carry out any activity that is going to be acting against the national interest of Pakistan. So that's pretty much it. Thank you for listening. I hope to see you in my next video.